Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we're diving into the final points of for 1.1 solids, liquids and gases. So we're going to discuss point number 4, point number 5 and point number 6. So let's read point number 4. Describe the effects of temperature and pressure on the volume of gas. Explain changes of state in terms of kinetic particle theory, including the interpretation of heating and cooling curves. Explain, in terms of kinetic particle theory, the effects of temperature and pressure on the volume of gas. So let's begin with point number 4, which is the effects of pressure and temperature on the volume of a gas. So first of all, we're going to discuss pressure. As you know that gases are compressible, and by changing the pressure acting on them, their volume may be influenced. So what exactly are the effects of pressure on the volume of a gas? When we increase the pressure of a gas, और ये इसका एक्सटर्नल प्रेशर होता है, अगर हम इस प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इट विल प्रोड्यूस अ डिक्रीज इन वॉल्यूम, एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेशन. सो इसका मतलब ये है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जब प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम कम होगी, या वॉल्यूम को ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर कम होगा. ठीक है, ये जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ये अपने नोट्स पे लिख लें, और ये एग्जामिनर पूछता है. तो बिसाइड्स द नोट्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू, यू शुड ऑल्सो राइट डाउन वट एवर आई एम सेइंग, because it's useful and the examiner can definitely ask you this. So these things are important, and I want you to keep that in mind. One more point I would like to add is that a decrease in volume is called compression, while an increase in volume is called expansion. Okay, now let's talk about temperature. The volume of gases may also be influenced by temperature, and जो टेम्परेचर होता है वो गैस के इंटरनल प्रेशर को एज वेल एज उसकी वॉल्यूम को अफेक्ट करता है. सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द मॉलिक्यूल्स हैव अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी. सो जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, सो मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड दे हिट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर more frequently and with greater force. So this causes an increase in volume. इसका मतलब ये है कि volume is proportional to temperature. जितनी ज़्यादा volume होगी उतना ही ज़्यादा temperature होगा. So if we reverse the process, अगर temperature decrease करेगा तो gas molecules की कम kinetic energy होगी, and they will hit the walls of their container less frequently and with attenuated force. Attenuated means reduced, और कम फोर्स के साथ उसके साथ कोलाइड करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स. सो वी आर गोना डिस्कस हीटिंग कर्व फर्स्ट. सो सबसे पहले एक सॉलिड है, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और इफ़ वी हीट द सॉलिड, उसके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्टर एंड फास्टर इन देयर मीन पोजिशंस, एंड द सॉलिड विल बिगिन टू एक्सपैंड. एक्सपेंशन क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करने से वॉल्यूम ज़्यादा होती है, और वॉल्यूम ज़्यादा करने को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंशन. सो नाउ दैट वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इवेंचुअली इट विल रीच इट्स मेल्टिंग पॉइंट. अब अगर हम आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो उस मेल्टिंग पॉइंट पे फिर अगर हम उसको फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, सो टेम्परेचर विल ऑल्सो रिमेन सेम ड्यूरिंग मेल्टिंग. सो सॉलिड है, मेल्ट हुआ, मेल्ट होके इट विल कन्वर्ट इट टू लिक्विड. So once all the solid has turned to liquid, the temperature will start to rise again, and liquid फिर से expand करेगा, और वो expand करता जाएगा until boiling point is reached. वाटर के केस में बॉइलिंग पॉइंट इज़ एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो उस पर बॉयल करेगा, और उस पर उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ब्रेक होंगी, और फिर ये है कि टेम्परेचर सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, और स्टेट चेंज होगी, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू अ गैस. अच्छा, अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछे कि डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग मेल्टिंग और बॉइलिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे? So the answer to that is that during melting and boiling, the molecules gain heat energy
to weaken or break the bond between the molecules and move them further apart. इसी वजह से जो मेरा पॉइंट था कि काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होती तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो इसी वजह से है. So due to this the molecules do not gain kinetic energy and the temperature remains constant. तो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछे तो you can simply write this. Now let's discuss the cooling curve, and the cooling curve is exactly the opposite of heating curve. So अगर एक गैस है, अगर हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें, so on cooling the particles of the gas will move slower and slower and the gas will contract. क्यों? टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. वॉल्यूम डिक्रीज को क्या कहते हैं? कंट्रैक्शन. फिर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो द पार्टिकल्स विल कम क्लोजर टुगेदर एंड जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं दे विल स्टार्ट टू फॉर्म बिटवीन देम वंस द कंडेंसेशन पॉइंट इज रीच्ड. और कंडेंसेशन पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. जब स्टेट चेंज हो रही होती है काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. वो हमने हीटिंग कर्व में भी डिस्कस किया. फिर जब सारी गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद टेम्परेचर दोबारा से गिरने लग जाता है एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड द लिक्विड अगेन कंट्रैक्ट्स बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन टेम्परेचर. सो वॉल्यूम डिक्रीजेस, सो देयर इज कंट्रैक्शन एंड until the freezing point is reached the liquid keeps contracting. Then once the freezing point is reached the intermolecular bonds between the liquid molecules start to develop to form a solid. क्योंकि जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो उनके बीच में बॉन्ड्स फॉर्म होने लग जाएंगे एंड दे विल स्लोली कन्वर्ट इनटू अ सॉलिड. फिर एट फ्रीजिंग पॉइंट अगेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज सेम. अब हमने पहले डिस्कस किया था कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग मेल्टिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. एंड अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग एंड डिस्क्राइब इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, सो इट इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ बॉइलिंग एंड मेल्टिंग. तो कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग में क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स लूज हीट एनर्जी to strengthen the bonds between the molecules and move them closer. Bond कब strengthen होंगे? जब molecules जो हैं वो एक दूसरे के close होंगे. And then again the point stands that the molecules do not lose kinetic energy, so the temperature remains constant. So ये दो बातें examiner आपसे पूछ सकता है related to heating curves and cooling curves. Now let's get to our final point, which is the effects of pressure and temperature on the volume of a gas in terms of kinetic particle theory. अब kinetic particle theory के तो काफ़ी postulates हैं, but we're going to discuss it in terms of pressure and temperature here. So we all know that kinetic particle theory states that all matter is made up of tiny particles which are always moving randomly. जो gaseous particles होते हैं दे टाइनी पार्टिकल जो रैंडमली मूव करते हैं, उनका फास्ट मूविंग मोशन होता है, उनकी रैंडम अरेंजमेंट होती है. सो जब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वी नो हाई काइनेटिक एनर्जी मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, लो काइनेटिक एनर्जी मीन्स दैट द मॉलिक्यूल्स मूव स्लोअर. Another postulate of kinetic particle theory is that the gas particles have no intermolecular forces. जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही नहीं होती एंड यू कैन ऑल्सो से दैट दे आर नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. देन अनदर पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इज कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस पार्टिकल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द होल कंटेनर. जो गैस पार्टिकल की वॉल्यूम होती है दैट इज़ नेग्लिजिबल, वो होती ही नहीं है. तो अगर हम हीट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, सो द पार्टिकल्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट विल हैव अ हायर काइनेटिक एनर्जी एज टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एंड हार्ड इनफ with greater force and they will break the intermolecular forces or overcome the intermolecular forces holding them and they will cause a change in state. या फिर अगर we cool an object, the particles inside the object have low kinetic energy and therefore they move slower
and the intermolecular forces begin to reform. पार्टिकल्स क्लोज आए, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हुई, उनके बॉन्ड स्ट्रेंथन हुए, और इसी वजह से देयर इज़ अ चेंज इन स्टेट. सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे, विच इज़ द नेक्स्ट सब टॉपिक 1.2 ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर. एंड उसके बाद हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा. So from the next unit, we will try to pace things up a bit so we can reach our final destination in minimal time. Thank you for watching this video. And if you find it beneficial or helpful in any way, so don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye bye.